Students, in this video, we will consider geometric programming problem with degree of difficulty 1. And basically we are dealing with unconstrained optimization. Fine. So unconstrained optimization with degree of difficulty 1. अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उन सब की डिग्री क्या थी? 0. But here first time we are solving geometric programming problem with degree of difficulty 1. And we are first considering unconstrained optimization problem. Then we will consider constrained optimization problem. तो हम पहले unconstrained को डील कर रहे हैं. इसको भी हमने दो हिस्सों में बांटा है. फर्स्ट unconstrained optimization with single variable problem, then unconstrained with multiple variable problem. ठीक. So let's see the first example. First example is unconstrained with one variable problem. So this is the problem. Minimum of f is x square plus x plus 3 by x, where x is positive. So this is our problem. So now this can be written as u1 plus u2 plus u3. What is u1? u1 is x square, u2 is x, and u3 is 3 by x. So we have three polynomials. So that's why degree of difficulty is 3. Here this is n. So degree of difficulty is n minus 1. What is n? N is a single variable problem, so n is 1, small n. Capital N is 3 because u1, u2, u3. So 3 minus 1 minus 1. So ultimately degree of difficulty is 1. Fine. So now we will solve this with the help of arithmetic mean, geometric mean inequality. So this is basically greater than equal to u1 upon delta 1 raised to the power delta 1, u2 by delta 2 raised to the power delta 2, u3 by delta 3 raised to the power delta 3. With the condition delta 1 plus delta 2 plus delta 3 is 1. And delta 1, delta 2, delta 3 all are positive. Now what is u1? u1 is x square. So x square by delta 1 raised to the power delta 1. Then u2 by delta 2, that means x by delta 2 raised to the power delta 2. Then u3, which is 3 by x by delta 3 raised to the power delta 3. Now collect all the powers of x. We get x raised to the power 2 delta 1 plus delta 2 minus delta 3. Then we have 1 by delta 1 raised to the power delta 1. 1 by delta 2 raised to the power delta 2. 3 by delta 3 raised to the power delta 3. This is equation number 1. Now from the orthogonality condition, this और x जो पावर है आपकी x की वो 0 होनी चाहिए. So 2 delta 1 plus delta 2 minus delta 3 is 0. This is orthogonality condition. What is the normality condition? This is our normality condition. Delta 1 plus delta 2 plus delta 3 is 1. So if you see, we have three unknowns, delta 1, delta 2 and delta 3, and we have only two equations. Hence, we can say that we will not have a unique solution. Rather, we are having number of solutions. तो कोई एक solution नहीं आएगा, number of solutions आएंगे. ठीक? So now we will eliminate or we will write basically, but we can say that among these three we will select a particular unknown and we will write down other unknowns in terms of that unknown. तो किसी एक को हम select कर लेंगे और बाकी जितने हैं variables उनको उस form में निकाल लेंगे. For example, we have selected delta 3. So now with the help of these two, we will find out delta 1 in terms of delta 3 and delta 2 in terms of delta 3. ठीक, तो delta 3 की फॉर्म में सबको निकाल लेंगे, delta 1 delta 2 को. So after solving this, we get delta 1 is equal to 2 delta 3 minus 1 and delta 2 is 2 minus 3 delta 3. इन दोनों को सॉल्व कर लो. फॉर एग्जाम्पल इनको ऐड कर लो तो डेल्टा 3 कैंसिल, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो डेल्टा 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा 3. फिर उसको पुट कर लेंगे तो फिर डेल्टा 2 निकल जाएगा एंड हैंस दिस इज डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2 इन टर्म्स ऑफ डेल्टा 3. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 हियर इन. So what we will get, minimum of f is greater than equals to, this is 1, x raised to the power 0 is 1.
So this term we have 1 by delta 1 raised to the power delta 1, 1 by delta 2 raised to the power delta 2, and 3 by delta 3 raised to the power delta 3. What is delta 1? Delta 1 is this 2 delta 3 minus 1. So substitute it here. So we get 1 by 2 delta 3 minus 1 raised to the power 2 delta 3 minus 1. Then this 1 by delta 2, but delta 2 is this 2 minus 3 delta 3. So 1 upon 2 minus 3 delta 3 raised to the power 2 minus 3 delta 3. Then 3 by delta 3 raised to the power delta 3. So we have a function in terms of delta 3 only. Fine. So let us consider the right hand side. That means this part. This part. So, and this is a function of delta 3. So let us denote by g delta 3. So g delta 3 is 1 upon this function. This function. So entire function is there. Now we want to solve this, or we want to, if you remember what is our this is the barrier. Here minimum of f and maximum of g of delta 3. So our purpose is to maximize this, and here our purpose is to minimize this, so that we have a balance here. So our target is to maximize this quantity. इसको maximize करना है, so that we are having the balance. So now to maximize this, because this is a very difficult or complex problem, so first we take the log. So log of g of delta 3 is, log लेने से power खत्म हो जाएगी. So minus 2 minus delta 3 minus 1 log 2 delta 3 minus 1. Similarly this will be minus 2 minus 3 delta 3 log 2 minus 3 delta 3, plus this quantity will be delta 3 log 3 minus delta 3 log delta 3. Fine. So this will be the logarithmic. Then differentiate with respect to delta 3. So the derivative of this quantity is 1 by g delta 3, and d by delta 3 g delta 3 is equals to, the derivative of this quantity is minus 2 log 2 delta 3 minus 1 minus 2. ठीक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट सेकंड फंक्शन से करेंगे तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे दिस फंक्शन. सो वी गेट 3 log 2 minus 3 delta 3 plus 3. Then we have to differentiate this. So we get 3 plus log 3 minus log delta 3 minus 1. Fine. तो ये पूरा टर्म आता है. And then after solving this, minus 2 plus 3 minus 1, all these are constants, so they will be cancelled out, and this should be 0. For maximization of this, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो इसका ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 होना चाहिए. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0. सो वी गेट दिस इक्वेशन. एंड नाउ हियर इसको रीअरेंज किया इक्वेशन को. आफ्टर रीअरेंजिंग दिस क्या कर सकते हैं हम, जो माइनस वाले टर्म है minus 2 एंड माइनस लॉग डेल्टा 3, इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो दैट दे विल बी पॉजिटिव साइन. तो ये हमारा वो इक्वेशन है, दिस 2 log डेल्टा 3 एंड माइनस लॉग, तो इनको हम एक साइड ले गए, जो बाकी की टर्म है उसको एक साइड रखा. सो log 3 log 2 minus 3 डेल्टा 3 प्लस log 3 ये रखा है. नाउ कंबाइन दीज टू, सो एंड इधर इसको भी कंबाइंड करेंगे, फिर दोनों साइड में लॉग आएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली वी गेट 2 delta 3 minus 1 raised to the power 2 delta 3. फ्रॉम हियर ये पावर में जाएगा और फिर इसका प्रोडक्ट हो जाएगा. सो 3 2 minus 3 delta 3 raised to the power 3. सो दिस विल बी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट ए क्यूबिक इक्वेशन, एंड इसका हम रूट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. सो रूट्स आर delta 3 is equal to 0.6, 0.6765 and 0.6765. So these are the 3 roots. तो 3 हमें सॉल्यूशन मिल सकते हैं, 3 सॉल्यूशंस. तो इन्हीं में से किसी एक सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी सेलेक्ट डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0.6 अगर हम रखते हैं तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम है या नहीं. सो मैक्सिमम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे मैक्सिमम है या नहीं, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, अगेन डिफरेंशिएट दिस. तो जो डेरिवेटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव विल बी -4 by 2 delta 3 minus 1 minus 9 by
2 minus 3 delta 3 minus 1. At delta 3 is equal to 0.6, this value is negative, hence maximum exist. तो maximum value आती है. अब ये डेल्टा 3 आ गया है हमारा, उठा के इसको डेल्टा 2 में रखेंगे, विच इज़ 2 minus 3 delta 3, दैट मीन्स 0.2 आ जाएगी वैल्यू. फिर इसी को डेल्टा 1 में रखेंगे, 2 delta 3 minus 1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.2. ठीक, तो तीनों वैल्यू आ गई. नाउ अब हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना. उसके लिए हम यूज़ करेंगे जैसे पहले किया था, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन u1 बाई डेल्टा 1 इज इक्वल टू u2 बाई डेल्टा 2 इज इक्वल टू u3 बाई डेल्टा 3. इसका हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक, सो व्हाट इज u1? u1 इज x स्क्वायर. व्हाट इज डेल्टा 1? 0.2. सो दिस इज इक्वल टू u2. u2 इज x अपॉन डेल्टा 2 0.2 इज इक्वल टू u3. u3 इज 3 बाय x डिवाइडेड बाय 0.6. सो नाउ पेयर वाइज सॉल्व कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडरिंग फर्स्ट टू, then we get this, and after simplification we get x square is equal to x. This gives you x is equal to 0 and 1. Now if you take first and last, so we get this. After simplification we get x square is equal to 1, and after solving this we get x equal to 1 and minus 1. Similarly if you are taking if you are taking, here we have solved second and last, ये हमने सॉल्व किया. नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट. ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट हमने लिया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, सो वी गेट एक्स इक्वल टू 1 1 1. तो अब इनमें देख लेते हैं इनका यूनियन. इनका यूनियन लिया तो क्या आया? 0 1 एंड माइनस 1. सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू 0 1 एंड माइनस 1. तीन सॉल्यूशन आते हैं. ठीक, सो व्हाट इज द मिनिमम ऑफ एफ विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द राइट हैंड साइड. अब इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू रख देते हैं. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1 अपॉन 0.2 विच इज़ 5. सो दस मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज 5 एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली. ठीक, तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू मिलती है 5. ठीक, ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. तो ये हमारा प्रोसीजर था. ठीक, सो दिस इज द वे. Now the second, here unconstrained but multivariable. अब हमारे मल्टीवेरिएबल हो गए हैं. ठीक, तो अब हमने वेरिएबल को मल्टीवेरिएबल प्रॉब्लम बना दिया. सो प्रॉब्लम इज दिस, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ x1 x2 इज 5x1 x2 minus 1 plus 2x1 minus 1 x2 plus 5x1 plus x2 minus 1. ठीक, so that's why we are having 4 polynomials, u1 u2 u3 u4. so what is capital N? Capital N is 4. number of variables 2 हैं, so small n is 2. degree of difficulty will be n minus 1. that means 4 minus 2 minus 1 is 1. so degree of difficulty is 1. again by arithmetic mean geometric mean inequality, so minimum of f x1 x2 is greater than equal to u1 by delta 1 raised to the power delta 1, u2 by delta 2 raised to the power delta 2, u3 by delta 3 raised to the power delta 3, u4 by delta 4 raised to the power delta 4. Now substitute the values of u1, u2, u3, u4, we get this term. Now collect the powers of x1 and x2, so we get this. So x1 raised to the power delta 1 minus delta 2 plus delta 3, x2 raised to the power minus delta 1 plus delta 2 minus delta 4, and then 5 by delta 1 raised to the power delta 1, 2 by delta 2 raised to the power delta 2, 5 by delta 3 raised to the power delta 3, and 1 by delta 4 raised to the power delta 4. ठीक, now from the orthogonality condition and normality we have this is equal to 0, this is equals to 0. so this is equal to, two equations are there. From the normality condition we are having delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus delta 4 is equal to 1. so we have 3 equations with 4 unknowns. that's why we are having infinitely many solutions. तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सिंप्लीफाई करो. तो किसी एक भी वेरिएबल को सेलेक्ट कर लो. सपोज वी हैव सेलेक्टेड डेल्टा 4, तो बाकी डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू हम डेल्टा 4 की फॉर्म में निकाल लेंगे. ठीक, सो इसके लिए हमने क्या किया? एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड किया. सो जब ऐड किया तो ये डेल्टा 1 से डेल्टा 1 कैंसिल, वी गेट दिस. डेल्टा 2 से डेल्टा 2 कैंसिल, so we get delta 3 is equal to delta 4. now adding 1 and 3rd, just add 1 and 3rd, so delta 2 से delta 2 cancel,
So we get this 2 delta 1 plus 2 delta 3 plus delta 4 is equal to 1, but delta 3 is equal to delta 4, तो यहाँ पुट कर लेंगे. So that's why we get delta 1. 2 delta 1 is equal to 1 minus 3 delta 4, and from here delta 1 is 1 minus 3 delta 4 divided by 2. So now we are having delta 3 in terms of delta 4, delta 1 in terms of delta 4. Now find out delta 2. So from second equation, from here delta 2 is delta 1 plus delta 4. But delta 1 we have evaluated, so substitute it here, plus delta 4. After simplification, 1 minus delta 4 by 2. So this is delta 2. So now we have evaluated delta 1, delta 2 and delta 3 in terms of delta 4. So this is the values. Now substitute these values herein in equation number 1, and utilizing these two orthogonality conditions. So this will be 0, this will be 0, so this will be 1, finally this will be 1. So ultimately we get only this term. And now put the value of delta 1, delta 2 and delta 3 in terms of delta 4. So we get this, which is nothing but a function of delta 4 and denoted by phi delta 4. Now again our target is to maximize this, maximize the right hand side, because our target is, here we have phi delta 4. So our target is to maximize this so that we are having balance, because our target is to minimize f. So minimize this means we want to move in this direction, and we want to maximize this so that we are having a balance in between this, and this will provide you the optimum solution. This is the concept of duality. So the dual objective function will be this. Right hand side is the dual problem, left hand side is the primal problem. Okay? So this is the dual problem. And now to solve this, because we have objective function in terms of powers, so first we reduce these powers, so hence we will take the logarithm. Logarithm is the best way to deal with the powers. So that's why if maximum of phi delta 4 is basically equivalent to the maximum of log delta 4. ठीक, तो log ले लेते हैं दोनों साइड का इधर. So log of phi delta 4 will be this power इधर आ जाएगा प्रोडक्ट में, and then log of this function. Log of this function means log 10 minus log 1 minus 3 delta 4 plus log of, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो log of this function plus log of this function plus log of this function plus log of this function. फिर ये भी पावर में है तो ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे, so this प्रोडक्ट में आ जाएगा ये, and then log of this function which means log 4 minus log this, then delta 4 plus log of this function, so log of 5 minus log delta 4. यहाँ पर भी delta 4 ही पावर है तो दोनों को कंबाइन कर दिया. So delta 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा log 1 minus log delta 4, and then differentiate this and put it 0. So we have differentiated this and then put it 0. So we get this equation. एंड देन जो पॉजिटिव लॉग की टर्म्स हैं उनको एक जगह रखेंगे, जो निगेटिव वाली उनको अदर साइड रखेंगे. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज द कैलकुलेशन ऑलरेडी यू कैन सी, आप इसको देख सकते हो. आई विल प्रोवाइड द नोट्स. हैंस वी गेट फाइनली दिस इक्वेशन. सो आफ्टर स्क्वायरिंग, बिकॉज हियर वी हैव 3/2, हियर वी हैव हाफ, so squaring both sides, so we get this equation. Now simplify this equation, so we get a equation of the in terms of delta 4, and here the highest power will be 4, so maximum possible solutions will be 4. तो इसको हमने सॉल्व किया तो उन्हीं में से एक वैल्यू को हमने कोट कर लिया है, डेल्टा 4 इज इक्वल टू 0.16, और फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो वो ऑब्वियसली आएगा निगेटिव. ठीक, तो वो हमने चेक नहीं किया, आप चेक करके देख लेना. तो डेल्टा 4 की जो वैल्यू है हमने सेलेक्ट की है 0.16. आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा सकते हो या कोई न्यूमेरिकल मेथड भी लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड आप लगा सकते हो, सेकेंड लगा सकते हो, न्यूटन रैप्सन लगा सकते हो. सो कोई भी मेथड लगा सकते हो. ठीक, फिर जैसे डेल्टा 4 आया, find out delta 1, delta 2, delta 3. So delta 1 was 1 minus 3 delta 4 by 2. So put it delta 4 is equal to 0.16, so we get this. Similarly delta 2 was 1 minus delta 4 by 2. Put delta 4 is equal to this, so we get this. So and delta 3 is equal to delta 4 is equal to 0.16.
So delta 1 star, delta 2 star, delta 3 star, delta 4 star, all are evaluated, and then substitute these values in the objective function phi delta 4 star. So substitute these values here. So we finally get 9.661, which is nothing but f of x star. And now our target is to find out x1 x2. For this we will use the equation u1 by delta 1 is equals to u2 by delta 2 is equal to u3 by delta 3 is equal to u4 by delta 4 is equal to f star or f is phi star. Both are same values. So here we are, for example, first with compare with f star, so we get this. Second with comparing with f star, so we get this. Similarly third and fourth. फिर u1 की वैल्यू रखी, डेल्टा 1 की वैल्यू रखी, तो वी गेट दीज इक्वेशंस. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन or doing all the calculation, we get x1 star is this, x2 star is this, and minimum of f of is 9.661. So this is the solution procedure. ठीक. Now in the next video we will discuss about the constraint problem. ठीक, तो इसको हम next video में discuss करेंगे. Okay, thank you.